तो हेलो गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं एसएससी chsl 2025 के लिए इंग्लिश का सेक्शनल मॉक नंबर 7। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी साथ लेके बैठें और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करते चलें और टेस्ट के अंत में कमेंट करेंगे आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो चलिए ओपन करते हैं टेस्ट बुक। और जिन लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आप सब पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पैराजिम्बल। अरेंज करना है इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो सारे ही ऑप्शन देख रहे हैं हम, डी से ही स्टार्ट हैं तो फर्स्ट तो डी ही होगा। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू हैड थिंक ए स्पेशल बॉडी मेट ए फिनोमिनल फेरी फेट राइट above our heads. We would notice it was not discovered by NASA scientists until after the fact. And the fact turned out, but a meteor hit our atmosphere on 18 and exploded with a force that was 10 times the energy of a Hiroshima atomic bomb. Turns out it went largely undetected because it took place over the Bering Sea in area that was closed. तो ए लास्ट में आना चाहिए, DCPA. Fill in the blank. Someone has blank my pocket in the bus and I have no money now. Someone has picked पॉकेट मारना। तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आवर हाउस वाज awkwardly damaged during the floods. Our house was badly damaged. फिर से पैराजम्बल ऑप्शन पे एक बार नज़र मारते हैं। CCAD स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। इन फैक्ट आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ much of anything. Okay, I am not a Republican and I don't even consider myself an American. If you are and I were American there would be no problem. I am not a Democrat. तो इसमें कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? बी से होगा नहीं। I am not a Republican and I don't even consider myself an American. ओके, ये भी नहीं है। I am not a politician, not even a student of politics. In fact, I am not a student of much of anything. I am not a Democrat. तो CD देखते हैं। CD Democrat. I am not a Republican and I don't even consider myself an American. If you and I were American, there would be no problem. Okay. Choose the correct spelled word. Competition. COMPETITION. So option number 2. Your love for junk food can play blank for your digestive system, so desist from it. Havoc. इस ईडियम या प्रोवर्ब का अर्थ बताना है। टू बीट द एयर, टू मेक फ्रेंटिक एफर्ट्स फुलिशली, टू मेक द एफर्ट्स that are useless or vain, to make every possible effort.
क्या होना चाहिए, ये तो होगा नहीं. एंड टू मेक द एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वैन, ये भी नहीं होगा. टू बीट द एयर, हवा को हराना. टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, नहीं. टू मेक फ्रैंटिक एफर्ट, फिर से वही ईडीएम को मतलब बताना है. एट हर फिंगर टिप्स, नॉट accessible in the compact disc on a typewriter, readily available. Find the error. Oh, for God's sake, leave me alone and go away from here. Oh, for God's sake, यही में पहले में कुछ लग रहा है गड़बड़. Oh, for God's sake, leave me alone. इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन फिर से है. द चिल्ड्रन हेयर are encouraging to have examined all the aspects before forming an opinion on any matter. The children here are encouraged to examine all the aspects before forming an एक सेकेंड देखते हैं 10th को फिर से. The children here are encouraging to have all the to examine. Okay, fill in the blank. Before going on a trip, I always prepare an blank of things I would need there. I always prepare an itinerary, short नोट टाइप में ऐसा होता है. रिटन डिस्क्रिप्शन ऐसे कुछ. रस्ट का सिनोनिम यानी रस्ट, प्रेस्ड, क्रस्ट, पीक्ड, स्लोड. रस्ट मतलब जल्दी जल्दी करना है. पैक्ड यानी प्रेस्ड, क्रस्ट. फाइंड द एरर. प्लीज कन्वे माई बेस्ट wishes back to your parents. Please convey my best wishes back to your parents. ये back to होना चाहिए. back to your parents. Please convey my best wishes back to your parents. No error, I think. Squalor, treachery, splendor, luxury, filthiness. Splendor, treachery. इसका तुक्का मार रहा हूँ. She said, I will have cooked the food by the time they arrive. She said that she would have cooked the food. By the time they arrived. And distinguished, opposite meaning. Venerable, infamous, esteemed, prominent. Venerable यानी prominent. Reverence. Antonym, scorn, bottleneck, defiance. आदर, सम्मान, डेफियंस ही होगा. By tomorrow evening, my uncle Ravi would reach the United States. She would have reached
तो फाइंड द वर्ड ऑफ फॉर द क्विंसेंट टेंस, यानी वन वर्ड, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हर मूड. सिंक्रोनाइज अपैथी, एम्पैथी. एम्पैथी. करेक्ट पैसिव फॉर्म. द टीचर मेड हिम, तो मेड तो वाज आना चाहिए. वाज या वर, तो वाज वर दो ही ऑप्शन में है. ही वाज मेड, he was made to complete the assignment in one day by the teacher. Wilma Rudolph was the first American woman to win 3 gold medals in Olympics. Wilma Rudolph was the first American woman to win 3 gold medals in Olympics. She was born preliminary in Tennessee in 1940. The bulk of her childhood was spent in bed. She suffered from she suffered from pneumonia and scarlet fever. Soon she became victim of the polio virus. और देख लेते हैं यार कौन से पिक्ड हो जाएगा बैडली या कोड. Competition, havoc, to beat the air, to make frantic, to make every possible frantic efforts at her fingertips, readily available. Are encouraged. The children here are encouraged to examine all the aspects before forming an opinion on any matter. Before going on a trip, I always prepare an itinerary of things I would need there. Rushed. इसका देखना पड़ेगा. चलो सबमिट हो चुका है. देखते हैं कितने मार्क्स. OMG, only 30 marks. सत्रह सही, 8 गलत. देखते हैं, आप मिलाना अपने आंसर्स. आपके सही हैं, कितने सही होते हैं कितने गलत हैं फिर बताइएगा. इसका आंसर देखते हैं क्या है. DACB. You would think a special body met a phenomenal fairy fit right above our heads. Weird notice, but a meteor hit. Okay. Someone has picked my pocket. Awkwardly damaged during badly. CDAB. Competition, second option. 6th, your havoc. To beat the air, to make the efforts that are useless, or when to beat the air. To beat the air मतलब हवा को भी हरा दिया, मतलब कुछ गजब का काम किया होगा. At her fingertips, readily available, जो आसानी से याद हो जाए.
ये थोड़ा साउंड को इग्नोर करना। ओ फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन, यहाँ पे ए में ही एरर था, गॉड सेक होना चाहिए था। आर इंकरेज्ड, इन्वेंट्री प्रपोजल स्केड्यूल ऑफ थिंग्स, इन्वेंट्री शेड्यूल तो हाँ है, शेड्यूल तो आएगा नहीं है इनकी वजह से, प्रपोजल भी नहीं आएगा। इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ सच आइटम्स ओके, एंड रीड प्लांट रूट ऑफ जर्नी, यार रस्ट फेस्ट, ओके बैक टू योर नहीं, बैक एट योर, माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट। ये तो चलो उसे एलिमिनेट करके सही हो गया था। फिल्दीनेस, दगाबाजी, स्प्लेंडर शानदारता, आलस्य आरामदायक, लग्जरी, दे अराइव्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन ओके। 16th का देखते हैं, इनफेमस, स्टीम्ड, डिस्टिंग्विश्ड, इनफेमस, OMG, डिस्टिंग्विश वो तो यार गैल्वनाइज्ड होता है एक, और रेवरेंस, रिस्पेक्ट, स्कॉर्न का तिरस्कार, would have reached, will reach, ability, empathy और apathy, which itself meaning without, it means the feeling of not being interested or enthusiastic about anything, apathy. He was made to complete the Wilma Rudolph was the first American woman to win 3 gold medals in Olympics. She was born prematurely in Tennessee. अच्छा, मैच्योर नहीं थी ये पैदा हुई तो जल्दी हो गई थी। The bulk of her childhood was spent in bed. She suffered from pneumonia. And scarlet fever. Soon she became victim of the polio virus. Okay, एक बार 24 में देख लेते हैं। With is used to describe having something such as being with a disease. Okay, तो अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लिए होंगे, तो बताइए आपका कितना स्कोर रहा है। मेरा तो ओनली 30। आप बताएं आपका कितना स्कोर रहा है इसमें कमेंट करके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।